Yes, sir. We are starting off a new chapter. Very, very easy chapter. A different topic altogether. We had two parts. One is macroeconomics. The other is Indian economic development. Okay. The Indian economic development, or IED in short form, has 10 chapters. How many chapters? 10 chapters. Okay. But the best part about IED, or the worst part about IED, it depends on where do you stand, is that those 10 chapters may say there are hardly two chapters. Yes, chapter number 3 and chapter number 8, which is a little lengthy. Other than that, these are small chapters. It will not take, like, for example, if macro we start, it takes generally 6 classes, 7 classes to complete one chapter also. Like foreign exchange took around 6 to 7 classes. So that way, ID won't take so much of time. It does not use so much of your brain also. Okay, like in macroeconomics, you used to analyze things, what is happening. Okay, autonomous transaction, what will happen to if there is an autonomous transaction. So all these things we are going into your head. In ID, it's very simple, straightforward. You have to recall things, you have to remember a few data that has been given, and there isn't any mathematics involved in ID. So there's no sums, there's pure theory which is there in IIT. So it has a complete contrast as to what you were studying in macroeconomics. It's completely contrasting. Okay, so it is good for some people, and it might be little on the unpopular side for the other group of people who are mainly interested in the practical portions. So it depends. Okay, but we will try to make it as interesting as possible so that you enjoy your bit of Indian economic development with me. Okay. Why do I see so less number of people joining? I don't know. Listen, so Indian economic development, the first 3 chapters which are there. Okay, first 3 chapters of Indian economic development, these are interrelated. Okay, the first 3 chapters of Indian economic development are interrelated. Chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3. Okay, these are interrelated, and we'll learn it like a story. Okay, we'll learn it like a story. Okay, 1 second, I'll just correct the lighting. Okay, so chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, interrelated. We'll learn it like a story. Okay, so that you remember everything which is there inside the chapter. Okay, so hear the story properly. Listen to the story properly. Okay, so I know how many people can relate with it. So listen, India, was a beautiful country. Okay, it is still a very beautiful country, but India is a beautiful country before the Britishers came. ठीक है, imagine now story building. ठीक है, पूरा story building characterize करो एकदम बढ़िया से कि अपने दिमाग में से बनाओ कि हाँ sir, what is happening, wow, so beautiful, right? See, so what happened that before the Britishers came now, India was very, very rich. Okay, rich with resources, rich with gold reserves. मतलब सब था सर आपके पास में, सब कुछ बोलते ना वो, सब कुछ है मेरे पास में. ठीक है, पैसा, दौलत, शौहरत, इज्जत, सब. Sir, Yes sir. sir, Devendra called me, said link is not there. Link Like, is not there. link है. Okay. मतलब One second. he did not. So I was telling that India was in a very beautiful position. Okay, India को सोने की चिड़िया भी बोलते थे, if you all remember. ठीक है, India had gold reserves, India had kind of all reserves, and we rightly said ना the dialogue. जैसे हमने बोला था कि इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, हमारे पास पैसे है, इज्जत है, शौहरत है, everything was there. ठीक है, suddenly the problem is, ठीक है, generally it happens now with people, that India came under the rule of the Britishers. Okay, India came to the rule of the under the rule of the Britishers, and बोलते ना वो situations change होने लग गया. आप बोलते जैसे आप अकेले जब अपने काम को कर रहे थे, you were doing very nice, ठीक है, बहुत अच्छा था, but गलत दोस्त, गलत संगति, गलत people with you all, and they can ruin yourself, right? And this happened with India also. ठीक है, 150 years का toxic relationship में था India. 150 years. ठीक है, 150 years of long toxic relationship was there between India and the Britishers.
ओके अब इतना लंबा पीरियड तक if India was with a particular country, तो कहीं ना कहीं there would be problems. Okay, there might be issues. Okay, so there was a phase, like for example, in 1947, what happened? You know, in 1947, India received its independence. Okay, India received its independence in 1947. But the problem is, sir, मुझे ये जानना है that what was the condition of India during the period of 1947? Sir, इतना लंबा period if Britishers has taken control over us. Okay, 150 years they were there with us. So what was the state of India during that time? Okay, what was the state of India during that time? We need to understand. Sir, first of all, you tell me, sir, in every chapter, you tell me, why do we need to remember all these things? What will it help us? Sir, I'll tell you very explain it properly. Okay? I'll explain you very nicely. See, इंडिया जो है एक डाउनफॉल की सिचुएशन से गिरा है. ठीक है, लाइक 1947 से इंडिया वाज इन अ डाउनफॉल. ठीक है, इंडिया वाज इन अ डाउनफॉल. ठीक है, फिर उसके बाद 1947 में अभी हम लोग स्टेट जानते हैं. ठीक है, कि क्या स्टेट में इंडिया था. फिर 1950 से क्या हुआ सर, इंडिया को रीबिल्ड करने का कोशिश किया. इंडिया को रीबिल्ड करने का कोशिश किया. ठीक है, बट प्रॉब्लम था सर. ठीक है, प्रॉब्लम था. हाउ मेनी आर गुड फ्रेंड्स, हाउ मेनी आर गुड फ्रेंड्स, टेल मी. हाँ सर, आपका जो फ्रेंड है ना, उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. ठीक है, ओह पिंच वाला चीज होता है, सॉरी. ठीक है, डोंट रिलेट. ठीक है, जस्ट टेलिंग. फ्रेंड के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो. ठीक है, आपका फ्रेंड का अभी अभी करेंटली ही हैड अंडरगॉन अ ब्रेकअप. राइट नाउ ही इज इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, राइट, नॉट इन अ गुड सिचुएशन. देख रहे हो, ब्रेकअप हुआ है, अभी बेचारा दुखी है. ठीक है, ही इज सैड. तो एज अ फ्रेंड व्हाट विल यू डू? एज अ फ्रेंड यू विल कम अप. ठीक है, बॉयज तो हैव वन सॉल्यूशन. ठीक है, बॉयज हैव वन सॉल्यूशन. हाँ बैठो. Okay, but the girls are, Nelly, we are recording. Wait, control your emotions. Okay, so but the girls are sympathetic. They're like, what happened? You know, you deserve better and all those things, right? But initially, she will tell you know what? See, it's all part of life. Okay, slowly and steadily, just let's evolve. Okay, then you will talk with her. You'll talk funny things so that ये धीरे धीरे ठीक हो जाए. And once he stabilizes or she stabilizes, okay, then you can tell her, okay, now you know what, now you have come up from her or from him, now you jump in your life, do whatever you want to do in your life. So same was the condition of India also. India के साथ में 150 years का relationship में था ब्रिटिशर्स. सर बुरा हो अच्छा हो, तो बुरा ही था ज्यादा, तो बुरा हो या अच्छा हो, the problem was that India was कहीं ना कहीं dependent. सर 1 years का यहाँ पर निबी relationships are there. ठीक है, तो this was 150 years. I'm not saying about you all. You people are so good. I'm just saying in general, you know. Okay. So the point is that India was somehow dependent on the Britishers. They were dependent because 150 years, one particular country is being ruling India. So they were dependent. And once they kept it there, अब उधर रख दो, अब उधर रख दो. ठीक है, once it was there, ठीक है, once the situation was कि okay, the Britishers are going away, so despite India being in a very vulnerable situation, we have to know that what was the condition of India. Sir, again coming back to my question, why is it important? Why is it important कि sir आप जानो? Sir, because when Britishers left ना, when Britishers left, India was not in a very good position. To be very honest, India was in a very very problematic situation. Let me come up to be very clear. ठीक है, इंडिया वॉज इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. इंडिया अपना बोलता है लो में था सर, जैसे कि आप अपने लो में हो जाते हो कभी कभी लाइफ में. ठीक है, तो इंडिया भी अपने लो में थे. ठीक है, अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट लोग आपको पिक करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. जरूरी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, बट पिक करते हैं आपको एंड देन हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सेम वाज इन द केस ऑफ इंडिया आल्सो. धीरे धीरे दे ट्राई टू पिक इट अप. ठीक है, अभी का सिचुएशन देखो सर, 1920 इंडियन इकोनॉमी इज डाउन. इंडिया माइट बी 40 years behind now. तो सर यही सब जो पॉलिसीज हम लोगों ने पहले अडॉप्ट किया था ना, जो गलतियां हमने किया था उससे हमें अवॉइड करना है. एंड वॉट एवर गुड पॉलिसीज वी आर अडॉप्टेड इन अ मोर रिफाइंड पोजिशन, वी हैव टू डू इट. आप पढ़ोगे यहाँ पे, जब चैप्टर नंबर 2-3 पढ़ोगे, यू विल फील ओके, ये तो पॉलिसी सर अभी भी है ना. आई से यस, बिकॉज द पॉलिसीज हैव बीन रीब्रांडेड.
The policies have been rebranded. For example, सर आपका आवाज कट रहा है सर। सर आपका आवाज सर कट रहा आवाज है। कट रहा है wait, सर wait, आपका। wait. So as I was saying that currently also, India is not in a very beautiful position. In fact, it is going a little on the difficult side only. But India has to rebrand itself, okay, rebuild itself. So looking at the history, we can understand what are the policies that the earlier government of India adopted. Okay, it was a pretty more tough situation than right now. Right now, we have to mainly improve 2 or 3 sectors of India. Okay. Other than that, we'll still say that India can still rebuild because a lot of resources are there if the pandemic goes away. But look at India's condition at that time. India had no resources. India was under the control of the Britishers for 150 years. Okay. So first of all, in the first chapter, okay, very easy chapter. First chapter, we have to understand what was the situation, what was the condition of India at the eve of independence. मतलब कि जब independence हुआ उस वक्त what was the condition of India? That we need to learn first. ठीक है, first situation. Second situation that we will learn is sir India ने धीरे धीरे अपने आप को rebuild कैसे किया? ठीक है, India ने धीरे धीरे how did it rebuild itself? ठीक है, what are the initial policies it adopted? India cannot go very like कि हाँ sir अब independent है sir, let's do whatever we want to. No, we cannot do that. It's a very big population with a very vulnerable situation right now. Just imagine somebody, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट हो और आपको ऐसे कंट्री को चलाना है जो कि होल एंड सोल डिपेंडेंट है, एंड यू विल लुक एट द सिचुएशन ऑफ इंडियाज कंडीशन, तो यू विल फील कि सर अब मैं क्या पॉलिसीज डालूं. ठीक है, सेम इज द सिचुएशन राइट नाउ. ठीक है, what should India adopt so that India is able to rebuild? And what happens when India goes out of control? ठीक है, what if the government is not able to manage India in the most proper manner? और जो policies उन्होंने लगाया था, what if it does not work? तो इंडिया को क्या steps लेना पड़ा to save India from collapsing, to save India from economic crisis? ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 3. सारे चैप्टर्स का आपको आइडिया है, डेफिनेटली है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट नो एनी ऑफ द टॉपिक्स. इन फैक्ट कुछ टॉपिक्स आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा. ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट. One good thing about this part is that you know the chapters. That's the best thing, right? But the thing is, if you recall the way I tell you, okay, if you remember the way I tell you, you will never feel bored about IIT because there are certain chapters which are independent chapters, you know, independent chapters. यानी कि उसका कोई link नहीं है from the early chapter. But at least जिसके stories बन सकते हैं, let us make stories, and it will be very interesting for you all. Okay, so अब India has just received its independence. Okay, India has just received its independence. We need to know what is the situation of India. Okay, what is the situation of India in the current situation, like in 1947? We have come back. ठीक है, अभी 2020 से हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग 1947 में आ गए. ठीक है, तो हमें इंडिया को जानना है कि सर व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस के वक्त में, क्या सिचुएशन था, ताकि हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सके. ठीक है, ताकि हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सके. देखो एक बार के लिए आज ब्रीफ ओवर दे रहा हूं चैप्टर का पूरा. जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली, जस्ट लिसन लाइक अ स्टोरी. यू हैव द नोट्स, यू कैन स्टिल रीड इट. ठीक है, बिकॉज यू पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द नेटवर्क थिंग आल्सो. ठीक है, सी नंबर 1 वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, नंबर 1 वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर. सर इंडिया जो कि आपको पता ना सर हमारे देश की धरती. ठीक है, एग्रीकल्चर वाज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया. ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द एग्रीकल्चरल सिस्टम? ठीक है, नंबर 1 वाज जमींदारी सिस्टम इंडिया में था. ठीक है, जमींदारी सिस्टम इंडिया में था. सर डू यू नो ऑल नो लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम? आपने लगान पिक्चर देखा था ना? लगान पिक्चर देखा कि सबने? उसमें क्या था सर, आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसमें से कुछ एक हिस्सा टैक्स या फिर लगान के फॉर्म में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ठीक है, तो द प्रॉब्लम विद द जमींदारी सिस्टम वाज कि they were not concerned कि सर उस साल प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, सर क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सीड्स अवेलेबल है नहीं फार्मर्स को. दे आर नॉट कंसर्न, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट वन थिंग, इट इज द फार्मर, इट इज द जमींदारी का जो लगान है वो. ठीक है, तो इंडिया में जमींदारी सिस्टम था उस वक्त. ठीक है, इंडिया में क्या था, जमींदारी सिस्टम था उस वक्त. उससे वजह से प्रॉब्लम क्या था सर, डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाया एग्रीकल्चर सेक्टर का. There was no development of the agriculture sector because the zamindars were just concerned about collecting lagans. ठीक है, they were not concerned कि क्या प्रॉब्लम है क्या है. नहीं सर, हमें दो आप सिर्फ टैक्सेस, हमें मतलब नहीं है. समझ रहे हो सर? फार्मर्स लोग कभी ग्रो ही नहीं हो पाए इंडिया में. देखो
एग्रीकल्चर में फार्मर्स कैन नेवर ग्रो बिकॉज दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लगान. ठीक है. एंड आप जब पॉलिसीज देखोगे ना, आप जब पॉलिसीज देखोगे ब्रिटिशर्स का, तो यू विल बी अमेज्ड. ठीक है. आप ये मत देखो कि सर चैप्टर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. आप ये देखो सर ब्रिटिशर्स ने हाउ स्मार्टली दे हैव अडॉप्टेड ऑल द टेक्निक्स. ठीक है. जो इंडिया का स्ट्रेंथ था ना, विच एवर वॉज इंडिया स्ट्रेंथ, ठीक है, they molded the population in such a way that they were like कि आप देख लो, we are giving you options, आप देख लो, we are not ruling you, we're just giving you options. धीरे धीरे अपना कमांड बढ़ाया and इंडिया को डिवाइड किया and they penetrated into the India's economy. See, number one, they knew that agriculture is the most important thing that India holds. ठीक है. After everything, India holds the most amount of importance toward agriculture. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को ब्रेक करो. ठीक है. पहले आप एग्रीकल्चर को ब्रेक करो. सबसे पहले क्या किया सर, आपको ओनरशिप था, आप लैंड के ओनर्स थे आप. ठीक है. यू वर ओनर्स ऑफ द लैंड. सर इनको हटाओ. पहले ओनर्स ऑफ द लैंड जो जमींदार को बनाओ, so that zamindars can collect lagan. Let them produce, let them do whatever they want to do, let them pay lagan, let them pay taxes. We are not being unfair, we are not being unfair. हम तो गवर्नमेंट है, हम तो थोड़ा बहुत लगान तो लेंगे. बट उसके चक्कर में क्या हो रहा था, they never gave control to the real landowners, and whatever they used to produce, they had to give maximum of them in the form of lagan. तो फार्मर्स का कभी डेवलपमेंट हुआ नहीं. इनफैक्ट फार्मर्स का हालत उल्टा खराब ही हो गया था. देखो, you feel bad about it, I understand, but look at their strategies. Okay. Number 2 was, देखो उनको पता था कि जब हम ऐसे करेंगे ना, जब हम ऐसा करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर वुड बी अफेक्टेड. दे न्यू इट. ठीक है. दे न्यू अबाउट इट. ठीक है. सो एंड फार्मर्स आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. ठीक है. तो उन्होंने बोला लिसन, सी, we are not here, I am the Britisher, okay, we are not here to make India bad. Okay, we are not here to make India bad. What we can do, listen, देखो आप ये क्या फूड क्रॉप्स उगा रहे हो. ठीक है. what kind of food crops are you doing? See, it is not giving you revenue also. ठीक है. instead of earning losses only. ठीक है. why are you growing food crops? food crops बन जैसे खाने पीने का चीज, wheat, rice, ठीक है, fruits, all these things are food crops. ठीक है. सब आप क्यों कर रहे हो? ठीक है. कोई फायदा नहीं है. Instead you grow cash crops. So what is cash crops? Cash crops are जैसे cotton, indigo, मतलब कि sir food crops which we consume, which we have. Cash crops are those crops which are used as raw material in the industries. जैसे cotton आपको पता उगता है, indigo पता आपको उगता है. ठीक है. ये सब आप उगाओ. ठीक है. ये सब हम खरीदेंगे आपसे, इंडस्ट्रीज में हम लोग परचेज करेंगे. ठीक है. द ब्रिटिशर्स सेड कि हम लोग परचेज करेंगे, विल पे योर हायर अमाउंट. ठीक है. पे लोअर टैक्सेस आल्सो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब देखो, पहले आपको पहले हैंडीकैप कर दिया बाय जमींदार. उसके बाद क्या किया, आपके जो आपका सिचुएशन था उसका फायदा उठाया. कैसे? बोला सर ये सब फूड क्रॉप्स मत उगाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. डोंट ग्रो फूड क्रॉप्स, ग्रो कैश क्रॉप्स, यू विल अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है. आप भी सोचते देखो यार यहाँ पे इतना टेंशन हो रहा है, इतना हेडेक है. ठीक है. लेट मी ग्रो फूड क्रॉप्स ओनली, सॉरी लेट मी ग्रो कैश क्रॉप्स ओनली. ठीक है. because ultimately if I can earn a bit of profit that will be good for me. ठीक है. let me earn a bit. So क्या किया farmers ने क्या किया, they shifted from food crops to cash crops. Okay, they shifted from food crops to cash crops. ठीक है. अब इससे फायदा क्या है? Farmers thought that they're in a benefit. Nice, now I'm getting more revenue than earlier. Nice. Britishers were happy because they were like कि मेरा तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहा है, बढ़िया है, इनसे रॉ मटेरियल खरीदूंगा और बढ़िया से सामान बनाऊंगा, बढ़िया हो गया. बट टू टेल मी वन थिंग सर, आप पहले खाने पीने का सामान खुद से बना रहे थे. ठीक है. मे बी इट वॉज कॉस्टिंग यू ₹20. ठीक है. टू प्रोड्यूस योर फूड. नाउ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी फूड क्रॉप्स. आप खाने का चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बिकॉज जब आप ये कैश क्रॉप्स यू ग्रो ना, the land fertility goes down very much. Like you cannot grow any other crop. If you have started growing indigo or cotton and all, you cannot generally grow any other food crop at least, because your fertility level goes down a lot. Okay. So at ₹20, okay, at ₹20, what happens? Okay. At ₹20, you used to grow your own food crop. You tell me, if I purchase it from the market, ठीक है, इफ आई परचेज इट फ्रॉम द मार्केट, इससे कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा? मुझे बताओ, इससे कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। Obviously ज्यादा होगा sir. It might cost you rupees 40 say if you purchase from the market. This was self. This was purchased from the market. ठीक है? So yes sir, you're earning. You earlier used to earn 10 rupees. Now you're earning 20 rupees. बिल्कुल सही sir. ठीक है? Correct. You're earning 20 rupees. You're earning double. Very nice, very nice. But sir खर्चा भी तो double हुआ. समझ में आ रहा है? Ultimately क्या हो रहा है सर? आप लॉस में ही हो. ठीक है? You're feeling that you're earning more, but your expenses is also high. ठीक है? तो अल्टीमेटली सर यूर लॉस, मतलब यार कोई फायदा नहीं हुआ आपका, अल्टीमेटली आपका लॉस ही हुआ इसकी वजह से. ठीक है? स्मार्ट पीपल. ठीक है? नाउ एंड सिंस एवरीबॉडी इज नाउ ग्रोइंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, देयर इज नथिंग टू ईट इन द मार्केट. तो अल्टीमेटली वैसे भी लॉस हो रहा है. इंडिया इज नॉट हैविंग एनी फूड. इंडिया को ड्राउट्स हो रहा है. ठीक है? इंडिया फेमाइन्स हो रहा है, नॉट ड्राउट्स, फेमाइन्स हो रहा है इंडिया में. लेकिन खाने का नहीं है सामान इंडिया में. Such situations are building up because of commercialization of agriculture. Commercialization मतलब कि from food crops to cash crops. Okay. Then India had a low level of productivity because, frankly speaking, we were so dependent on the natural resources ना, इतना dependent है कि हमारा land fertile है, वो अच्छा है, that we never worked on technology. We never worked on the concept of fertilizers. We never worked कि सर अगर बारिश नहीं आया तो क्या करेंगे अपन? बारिश नहीं आया तो रुका रहो आप, खेत सूखा है. We had no alternative sources of productivity, and this was badly hitting them. Okay, India was having a low level of productivity because we were not adapting ourselves. ठीक है? और मुझे बताओ, अब आपको मैंने situation बता दिया एग्रीकल्चर का. ठीक है? That India had zamindars who were ruling them. India was growing cash crops. We had low level of productivity. Will you invest in agriculture as an individual? Will you invest? Tell me. No. No. नहीं सर. नॉर्मल सा बात सर, यू विल नॉट इन्वेस्ट. सो देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. नो पीपल वाज रेडी कि वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में. क्यों करे सर? इट इज अ लॉस मेकिंग फॉर्म. यू कैन क्लियरली सी नोबडी वाज इन्वेस्टिंग. ठीक है? सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर. नाउ यू विल फील बैड. ओके, दिस वाज द बैड. यस, इट वाज बैड बिकॉज़ दिस स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंटेड. जो इंडिया का स्ट्रेंथ था उसके ऊपर हिट किया. दे न्यू द फैक्ट कि इंडिया में कुछ भी हो जाए, फार्मर्स आर नॉट लिविंग देयर लैंड्स. ठीक है? फार्मर्स वोंट लीव देयर लैंड्स. दे टू द एडवांटेज. बोलते आप करो ना खेती, कोई दिक्कत नहीं, यू विल हैव जमींदार्स. ठीक है? यू कीप योर लैंड, नो प्रॉब्लम. जमींदार, तुमको पता था कि कुछ भी हो जाओ, फार्मर्स आर नॉट लीविंग देयर लैंड्स. जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. दे न्यू दैट दे नीड मोर मनी, कैश क्रॉप्स, कमर्शियलाइजेशन. ठीक है? दे नेवर हेल्प्ड इंडिया टू डेवलप बिकॉज दे नेवर वांटेड इंडिया टू डेवलप इट्स एग्रीकल्चर. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट. Strategy. You might feel bad, but look at from the Britishers' point of view. They were brilliant. Yes, it's a very bad policy that they adopted to downsize India's condition, but that's a fact. ठीक है? Now then it comes industrialization. ठीक है? Industrialization, industry में क्या किया? सर बेस्ट बताता हूँ सर. एक कंट्री तब डेवलप होता है जब उसके अलग अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, सारे डेवलप हो. No country can be dependent on one particular sector. And when we have live classes, I'll discuss more things with you all कि कोई भी country एक दूसरे country से आगे कैसे बढ़ता है. ठीक है? How did US become so powerful, or how did China become so powerful? We have to understand these countries so that we can implement in our country so that we can develop. This will learn when we'll study afterwards. Okay, but the point is, sir, any country can develop only when all the three sectors are dependent. Agriculture, industry, service, at least that much. Agricultural condition you have understood. Industries India में develop ही नहीं हुआ sir. Best. जो थोड़ा बहुत local made industries था बस sir वही है. No industries were allowed to be developed. Sir कभी focus ही नहीं किया. मैं आपको बोलूंगा कि सर यही पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, मैं आपको नॉलेज उतना ही रहेगा ना सर. If I don't tell you anything outside the world that such a thing also belongs, you'll सर be like, वीडियो okay. पॉज हो गया सर आपका. पॉज हो गया वीडियो? नहीं सर. नहीं हुआ. ठीक है, ओके. अरे शायद आपके नेटवर्क में इशू था, देख लेना थोड़ा सा. ठीक है? सो मेरे को टेक्स्ट चैट कर दिया करो ना, बिकॉज अल्टीमेटली ना ब्रेक्स द फ्लो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. हां, सो one second. Who is facing network issues? Kumkum. Okay. Sorry.
So industries develop ही नहीं होने दिए sir. Industries were not being developed. ठीक है? Why? They told us, ठीक है, the British told us, sir, you produce raw material now. You don't worry about it. You produce raw material, we'll produce for you. You produce cotton, we'll produce shirts. You produce indigo, we'll make the final product. ठीक है? There's no point that you develop industries. No point. ठीक है, मैं आपको बोलूंगा सर आप मेहनत ही मत करो बिल्कुल भी, नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बना के दूंगा ना, आप पढ़ो ही मत कुछ भी, जितना मैं कराता हूं उतना कर लो, हो जाएगा, तो मे बी यू विल बी हैप्पी, बट क्या आपका ग्रोथ हो पाएगा? नहीं. तो उन्होंने बोला सर यू व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ हेडेक? इट्स वेरी सिंपल सर, यू डोंट डू एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, यू गिव अस द रॉ मटेरियल ना, यू गिव अस द रॉ मटेरियल, वी विल मेक द प्रोडक्ट फॉर यू. तो इंडिया में इंडस्ट्रीज कभी डेवलप ही नहीं हो पाया सर. आप बड़े खुश, अरे वाह एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा सामान, बट लुक, जैसे हम लोग का अभी फायदा दिख रहा था ना हम लोग की कैश क्रॉप से वी आर अर्निंग, बट वी हैव कंक्लूडेड दैट वी आर एक्चुअली नॉट अर्निंग एनीथिंग. सेम वाज विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर. देखो इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, फॉर एग्जांपल कॉटन इंडिया सप्लाई कर रहा था, ठीक है, हमें लगा कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, वी आर अर्निंग 100 रुपीज फ्रॉम द कॉटन, ठीक है, ये कॉटन गया ब्रिटेन, मैन्युफैक्चर हुआ, यू टेल मी, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होता है या फिनिश गुड्स का? Finished goods. Finished goods. शर्ट्स बना, ठीक है, फिनिश कुछ का सेम 100 रुपीज का चीज 1000 रुपीज का हो गया, बिकॉज फिनिश गुड्स आर नेचुरली वे हायर इन इट्स प्राइस देन रॉ मटेरियल, ठीक है, दिस शर्ट्स बिकेम 1000, ठीक है, एंड इट वाज अगेन सोल्ड टू इंडिया. Who is at a profit? British. Britishers. ब्रिटिशर्स 100 रुपए का सामान हमने दिया, 1000 रुपए का सामान लिया हमने, मतलब कि 900 रुपए का सामान हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं. Okay, so we were never at a profit. We were never at a profit. We felt that we are earning amount, but we're actually not earning. We are spending more than what we were earning. So you can never grow. If you are spending more than what you're earning, you can never grow. Okay, this is policy number 1 that they adopted. Your industries did not develop, sir. And number 2 industries was handicraft industry. ठीक है, India was very famous for its handicraft industry. ठीक है, very famous. In fact, India का जो handicraft industries था ना, वो it was used to be exported worldwide. It was so in demand. ठीक है, strength है. If you know, so if you're an opponent, you know that this person has this strength. ठीक है, of handicraft industry. Break कर दो strength को. Break कर दो sir. ठीक है, break कर दो आप. Simple. For example, if you know that Yogesh can ball well, ठीक है, bowling अच्छा कर सकता है ये. ठीक है, मैंने बोला एक काम करो, 10 ओवर्स का मैच है, पहले योगेश सोचा कि मैं 4-5 ओवर कर लूंगा, so that I can balance it out. ठीक है, like one over में कोई और कर लिया, second over योगेश does, so that he can balance the run rate. I tell maximum 2 overs can be done. मैंने क्या किया योगेश को, what did I do? I broke the thing ना, I broke his plan, right? I contacted him, but you cannot say anything because I made a rule. I'm not implementing any problems. I'm implementing a rule. Similarly, sir, बोला Britishers ने बोला sir, okay, you export, ठीक है, but you have to pay when you export raw material, no taxes. When you export raw materials, no taxes, no export duty. But when you export finished goods, you have to pay export duty. When you export raw materials, no export duty. But when you export finished goods, you have to pay export duty. और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इतना हाई कि आपका सामान का कॉस्ट इतना हाई हो गया कि बाहर के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे खरीदने का. तो मुझे बताओ इंडस्ट्री क्या होगा? बंद हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब कि गुड्स विच आर मेड फ्रॉम हैंड्स. ओके, सो वी वर मेकिंग गुड्स फ्रॉम हैंड्स. ठीक है, वी वर मोर, बोलता ना वो लेबर इंटेंसिव, and these people were making shirts out of machines, whichever size you want, and in much more speed, because machines are faster than men, much more cheap or much more low costing in comparison to handmade goods, right? So number 1 was high export duty, so export sales गिर गया. Number 2, India was not able to compete with machine made goods because obviously machine made goods are cheaper, more perfect and readily available.
in all sizes, all directions, all designs. This cannot be in the case of handmade goods. तो natural सा बात है सर, बोलते ना सर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इंडिया में वेरी वेरी फेमस, okay, which is very very famous, it got declined, it got affected. See, I'll tell you, understand the strategy that Britishers have followed. ठीक है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वो रूल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से they made the condition of India in such a way that you were left with no position. So industries could never be developed because A, that they did not promote, and number two, whichever industries we had, it got declined. Okay, and similarly, sir, if we talk about foreign trade, we were exporting goods, but tell me what we were exporting. We were just exporting raw materials. We were not exporting finished goods. So ultimately, our trade, we were at a loss. We were at a loss when it comes to foreign trade. Okay, we were not actually earning profits. Okay, we were actually not earning profits. Okay, we were actually at a loss. ठीक है, पूरा जो पूरा ट्रेड था ना साहब, all the international trade was being controlled by Britishers. So you cannot do anything. You cannot sell because there was high export duty. If you sell to some other countries, you could not have sold to other countries. They would not be able to buy your commodities. Okay, you will not be able to buy the commodities. Okay, so that was the situation of India. That was the situation of India. Right? No foreign trade. Agriculture sector was bad. Industrial sector, you have seen that they were not able to develop it. Okay. Now look at the India's condition. देखो सर क्या होता है, ये तो सर economical point of view से हो गया. So what was the situation of health infrastructure in India, education sector in India? Look at high birth rate, high death rate. ठीक है, high birth rate, so everybody knows only why high birth rate was there. No bijli, no electricity. That's why. ठीक है, high death rate because small diseases we did not have the proper infrastructure facilities, health facilities. Literacy rate, look at the female literacy rate once. Look at the female literacy rate once. Can you see? Yes, sir. 7%. Yes, sir. 7% was the literacy rate. Do you know what is the meaning of literacy rate? Just asking. Do you know the meaning of literacy rate? कि सर पॉपुलेशन कम था. What was the literacy rate? How does it depend? नहीं, अरे how does it पे matter? ऐसे कुछ होता है पर How 100 does men how does पे it matter? How does it matter that your population is less or not? अरे सर अगर आपको अगर सोचो for example, if you are 10 people and 9 out of them get 90% and above, what is the percentage of getting 90? 90%, right? And if there are 30 people and you get 27 are getting 90, then also the percentage is what? 90. 90. So उससे क्या फर्क पड़ता है पॉपुलेशन कम है या नहीं? मैं पूछा लिटरेसी रेट क्यों कम है? And पर first of all, 100 forget के that. ऊपर होता Forget है. that. No. It's not about being 100 also. I'm just asking कि सर ऐसे तो देखो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज होता है जनरली, इट्स नॉट इन 100. बाकी इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेट ये सब 100 पे रहता है जनरली आपका. बट आई एम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी रेट? हाउ विल यू कंसीडर योरसेल्फ एज लिटरेट इन इंडिया? तो वो था ना कि कोई अरे सर फीमेल जन्म होता तो मारता है. जो 7 साल के not ऊपर हो. asking the reason. I'm not asking the reason. I'm asking what is literacy rate or what is literate in India? सर लिटरेट का मतलब तो होता है कि 7 साल से ऊपर हो और कोई भी एक लैंग्वेज में लिखना और समझना जानता हो. राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन वन लैंग्वेज. Yes, मतलब कुछ extent तक Harsh is correct. Okay, listen. Very good. Actually, Harsh is very close. I'll say कि अगर आपको कोई भी language, कोई भी one particular language in India, कोई भी one particular language you can write, you can understand, you can explain somebody, ठीक है, and you can communicate in, ठीक है, then in that case you are considered as literate. So you can see na 85%, 90% literacy in India or in some states. That means you can understand one language, you can explain one language, you can talk in one language, and you can write in one language. Okay, that was also 7% in India. Think 7% लोग ही था बस, तो लोग को एक लैंग्वेज आता था बोलना लिखना. इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश एंड ऑल ना. यहाँ पे ये मत सोचना आप लोग कि आपको एक पर्टिकुलर बैचलर्स डिग्री लेना पड़ेगा या फिर 12th का डिग्री यू हैव टू हैव फॉर कॉलिंग योरसेल्फ लिटरेट. नो, even if you have not gone to the school also, but you know one language to write, understand, explain, or what communicate in, you are considered as literate, my dear friends. I don't know how many people knew about it, but that was the situation. Okay, and India's literacy rate was around 16%.
Among that, female literacy rate was 7%. Miserable situation. Infant mortality rate, you know what is infant mortality rate? You know what is infant mortality rate? सर 1 साल से पहले तो 7 and newborn dies before turning 1. Yes. So that was 218 per 1000. सोच पा रहे हो 1000 में से 218 लोगों का डेथ हो रहा था. 218 people die. 218 children die before the age of 1 out of 1000. Imagine the situation. That was the situation of India's demographic situation. Okay. फिर you know the fact that people were mostly dominated on the primary sector, मतलब agriculture sector में they were mainly dependent. That was the situation. And India's infrastructure development was also not that good. मतलब roads were not that good because all weather roads थे नहीं. Few roads were there, but that used to serve the purpose of Britishers only. Okay, they used to serve the purpose of Britishers only. As such, there was no use. We could not use it. Sir, Britishers are being praised for developing railways in India because Britishers were the people who developed railways in 1850. They developed. Very nice. They developed. Okay, बहुत अच्छा था railways. Okay, railways broke the shackles. You could travel from one area to another area. You can travel from one country to another country because of the railways. Very nice. But Indians were not allowed to use only. Or they were used to allowed in a very extreme situation. मतलब कुछ एक बोगी छोड़ दिया तो बस ठीक है. Otherwise, you cannot travel in the railways. You cannot use the railways. You cannot avail the benefit of railways. It was after independence that we could avail the benefit of railways properly. That was the situation. Develop होने के बाद भी we cannot use. ठीक है? The air and water transport could not develop so much. Communication medium उतना कुछ था नहीं. Postal services were the main thing through which we were developing. Okay, so and there are certain positive contributions which also Britishers put, but it is way less in comparison to what they have done in the other sectors. That is why it's not such a praising point that we need to discuss. So that was the situation of India. You know, that was the situation of India when India was about to get independent. Okay, this was the situation when India was about to get independent. So जब हम लोग policies design करेंगे ना next chapter, ठीक है? We have to think as to what was the condition of India. One, population is very high. India का population is very high. ऊपर से all the important sectors are in a collapse. चाहे वो agriculture or for industry or foreign trade, anything. India's basic structure of demographic condition, health infrastructure, education infrastructure was bad. Think as a situation, what efforts they had to put to develop India. And it was so difficult for them to develop India. Right? So, this is a brief overview of the chapter, which is chapter number 1. I hope that you understood a lot of things and you found it interesting, because generally what people complain is that they don't find ideas interesting. But I hope with this form of narration that I've given you, people are finding it interesting. Yes, sir. कि जो Yes, idea आप sir. कर रहे हो. I think humanities people are happy today, na? Humanities बोलते sir, my department, sir. My department, sir. है ना? Yes, sir. Devendra is happy today. Devendra is like कि अब मैं 100 लेके आएगा economics में. Yes, sir. Okay. So others also, I hope it made sense. This is a small overview